Hi everyone, so this video is an investor education initiative by Incred Money. This is a SEBI registered bond investment platform. In case you're interested in checking out and figuring out how to do investment in bonds, do check out the links in the description and comment box. There are more details that we have presented. The content has been made by industry experts with decades of experience in bond investing and credit analysis. Hi everyone, welcome to today's video. So a natural question in the market right now is that should you wait for the market to fall and then invest, or should you continue to invest? Because the market gave a rally and then it has been consolidating sideways. So natural sa response hota hai ki yaar, you know what, let the market fall, then I will invest. Should you do that? The short answer is no. You should not be doing it, because then you will miss out on some really great buying opportunities. My hypothesis is that the market is very much in the bull run right now, and the biggest bull run is yet to come. So you should continue to invest. In what format? I will tell you. What I'm going to do is that I'm going to make a macro case. I'm going to help you understand macroeconomics sensibly in very easy to understand language. बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है इसके लिए. So just a humble request that if you do like these type of macro oriented videos, do press the like button. That's one. Second key thing is that I'm going to go into stock specific things. Macroeconomics समझाने के बाद I will give you stock wise details of some of the good stocks that you could consider buying and some of the stocks that you should be selling. Okay. So with that viewpoint in mind, let us kick start. And there are 5 key macro points that you should know. बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ एक एक करके. So the first key point that you must understand is that the interest rates are going to get cut this year. Now this is not just me saying, this is what many economists are predicting, that there will be multiple rate cuts this year. In fact, many countries have started to cut interest rate. यहाँ पे आप देख सकते हो, this is a very good macro chart. It highlights that some countries are already cutting interest rate in Q1 of the year 2024. Some are expected to cut in Q2 of 2024, so on and so forth. अब आपका एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स आएगा दैट ओके ठीक है इंटरेस्ट रेट कट हो गए तो ऐसे क्या हुआ मच गया राइट एंड व्हाट गुड विल दैट लीड टू वेल व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर कट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम्स डाउन फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट इट दिस वे दैट राइट नाउ इफ यू हैव अ होम लोन एंड इफ यू हैव रिसेंटली पिक्ड इट अप देन द EMI पेमेंट वुड बी एट लाइक 9.5% राइट सो आपके 9.5% के आसपास होगा आपका होम लोन डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स सो दिस इज फेयरली हाई if the interest rate gets cut then what is going to happen is that home loan rate is going to come down. Similarly, any type of borrowing rate is going to come down and that is generally good for the market. जब भी interest rate cut होते हैं and when the interest rates are cut and are made low, then the market gives out its biggest rally. मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ. For example, if you take a look at this particular chart, you will see that 2008 में crisis हुई थी and from 2009 all the way till roughly 2013, 2014, the interest rates were close to 0%. अब तो आप बोलोगे कि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस थी 2008 में, तो स्टॉक मार्केट शुड हैव बिकम एब्सोल्यूट डब्बा. No, absolutely not. In fact, if you take a look, I will show you Nifty 50. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2008-9 का पीरियड ये रहा, जीरो इंटरेस्ट रेट पीरियड एंड ऑल द वे टिल 2015-16, तो 2013 भी मान लो. सो मार्केट हो गया ऑलमोस्ट 3 times in the next 5 years डिस्पाइट द वर्ल्ड विटनेसिंग इट्स बिगेस्ट क्राइसिस. अगेन समथिंग सिमिलर हैपेंड दैट इन 2020 कोविड क्राइसिस वॉज देयर. द इंटरेस्ट रेट्स वर कट टू जीरो. अगेन यू कैन सी दिस फ्रॉम द चार्ट that the interest rates were close to 0.25%. यहाँ पे भी डबल हो गया था स्टॉक मार्केट in a very short span of time. So to cut the long story short, whenever interest rates are cut, that is when we see the biggest stock market rally. Right now हम कहाँ पे हैं? हम in actual terms we are at 5.5-6% interest rate. This is going to get cut this year and in 2025 also. Expectations are that it will start to get cut somewhere in the second half of 2024 and the game is going to continue all the way till 2026. Okay, so this is a period which might be very useful for the market, but यहाँ पे एक counter argument भी है. Counter argument is that see elections are going to happen, so we don't know what happens after election. Policy continuation will be there or not there. So all those things need to be factored in. But if we just keep the next 6 to 12 months viewpoint, we should still remain in the market. We should continue to buy it. Okay, so this is point 1 कि भाई interest rate कटने वाला है. It's not what I'm saying it. It's what economists are generally telling us. So this is first key factor. The second key factor is the movement of money from bond market to equity market and from equity market to bond market. Now, whenever the money moves from equity market to bond market, the equity market or the stock market falls.
When opposite happens कि bond market में पैसा लगा हुआ है and the money moves from bond market to equity market, the stock market rises. यार इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको जनरली बताए नहीं जाते. So in case you are enjoying this, do consider subscribing to this channel and also press the like button because बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए. So hopefully you will like it, right? Now what has happened in the last 2 years is that the bond market was giving very good returns. Now what is the meaning of this? Well, in simple term it means that, for example, if the base interest rates are close to 6%, now this is fairly high rate of interest that people can make or investors can make by staying in the bond market. So bond में पैसा बहुत लगा हुआ था. Now what will happen is that as the interest rate gets cut, what will happen is that instead of this being 6%, it will become 5.5%, then 5%, then 4.5%, right? So on and so forth. So फिर क्या सोचेंगे लोग कि यार you know what boss, क्या फ़ायदा बॉन्ड में पैसा लगाने का, इतना कम पैसा बन रहा है. सो आई विल गो टू इक्विटी मार्केट एंड वेन एवर मनी स्टार्ट्स कमिंग टू द इक्विटी मार्केट, व्हाट विल हैपन टू द इक्विटी मार्केट? इट विल बिकम अ रॉकेट. The returns that you will make, you will see very strong returns, and in that context you need to understand that when money is shifted from bond market to equity market, what type of stocks are going to give a run up. वहाँ पे आपको homework करना पड़ेगा. This is something that I will teach on my member community also. I write posts like these जिसमें आपको concepts पता चले. So I'll write a post on this tomorrow. Okay. So to cut the long story short, this is the second key thing that is going to happen in the next 6 to 12 months, and therefore I feel that the market is still very much bullish. The third key thing that is happening in the market is that the consumer demand will be revived in the next 1 to 2 years. Now, what you need to understand is that in the last 2 years, basically our GDP has gone up. Now, why does the GDP go up? Because the private expenditure goes up or the government expenditure goes up, और बोथ द थिंग्स गो अप. बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, एंड दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जीडीपी. प्राइवेट कंजम्पशन मीन्स कि यार आपके और मेरे जैसे लोग आर स्पेंडिंग मोर मनी इन द इकोनॉमी, एंड एज ए रिजल्ट the economy is growing and GDP is growing. On the flip side, what can happen is that the government is spending a lot of money, क्योंकि यार प्राइवेट में कोई खर्चा वर्चा कर नहीं रहा है, गवर्नमेंट को GDP बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट खुद ही जाके खर्चा कर देगी. So in Indian context, what has been happening is very simple कि if you go and look at public sector units, the government is actually selling its stake, right? कि उनकी 70% होल्डिंग होती थी. Now they have brought it down to 60%. So they have sold like 10% of holding that they had. उससे उनको क्या मिला? उससे उनको पैसा मिला. Now this money they have actually gone and spent on developing infrastructure. So उससे हुआ क्या कि GDP बढ़ गई, right? So the last 2 years have been about government spending, and the government is taking more and money on deficit. It is financing its infrastructure spent by what I just told you. So government spending has been high. Okay, and now it is estimated that the government spending is going to be lesser in the next 2 years. This is a negative point about the economy, that the government spending will be less. Why? Because government has decided that it is going to reduce something called as fiscal deficit, right? ये fiscal deficit अभी करीब 6-6.5% है. They are going to bring it down to roughly 4.5-5% के आसपास over the next 2 years. So what that indirectly means is that the government spending is going to go low. Okay. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपका अगर सरकारी चीज़ों में पैसा लगा हुआ है, यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल. Which brings me to what type of stocks you can sell. Okay, so let me just quickly show something to you. So for example, if you take a look at RVNL, right? आप या कोई भी IRFC भी देख लेना, उसमें भी सिमिलर सही होगा, right? कि for example, PE ratio is highest ever PE ratio, right? So it's the most expensive, so to say, right? Price आप देख लो, right? For example, in 2022, the stock used to trade at 33 rupees and it made a peak of 320 rupees. So कितना हो गया? Almost 10 times हो गया stock, right? And it has now corrected by a lot. And इसी तरीके का straight line decline आएगा if the fundamentals of the company are not aligned with the stock price growth. Okay, देखो कोई भी stock गिर सकता है. I'm not saying that only RVNL and all the IRFC इस टाइप की कंपनियाँ गिरेंगी, but the probability of fall is much higher. Okay, so for example, why am I saying it, right? So आप जाके सिंपल चेक कर लो यार कि कितना प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह बनाते थे. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्री कोविड इट वॉज एट 10,000, डबल हो गया उनका, राइट? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात, राइट? एंड व्हाट अबाउट नेट प्रॉफिट्स, वो भी डबल हो गया, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. एंड हाउ मच हैज द स्टॉक प्राइस गॉन अप बाय, राइट? वो 2019 में देख लो आप स्टॉक प्राइस क्या थी, राइट? सो 2019 में द स्टॉक प्राइस वाज लाइक 18-19 रुपीज़ और समथिंग, एंड यार it became like 15-16 times. Okay, now does the stock price increase align with the performance of the company? The short answer is no. This is a sentiment driven rally. सबको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती चली जाएगी, करता चली जाएगी. Yes,
the government was obligated to spend money in order to increase GDP over the last 2 years. So रैली आ गई एंड इस तरीके में कोई फंडामेंटल नहीं है यहाँ पे. क्रैश होंगे तो इतने क्रैश होंगे एंड देन यू विल बी स्टक विद दीज टाइप ऑफ stocks for 10, 15 years, right? So be a little bit careful. Do not build positions on these type of companies. This is what I would suggest from a macro point of view, that the risk reward does not make any sense. So okay, coming back to the point that I was making, that the private spending is going to increase. अभी हो क्या रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, राइट, जो कंपनियां हैं उनके बाजे बज गए, राइट? वाई? ऐसा थोड़ी कि यार पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एसी एंड ऑल दिस स्टफ. नहीं, बट इफ यू गो एंड चेक, यार पिटी पिटाई कंपनियां चल रही हैं, राइट? एंड दैट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 3-4 years. इफ यू गो एंड चेक स्टॉक्स लाइक वर्लपूल एंड ऑल दैट, 3-4 year negative returns, right? So I mean, which is really really bad from that perspective. What is the number one reason for that? Well, उनको इतनी मार पड़ी है, पहले इन्फ्लेशन की मार हो गई, फिर यार कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स पे दिक्कतें आ गई, फिर कंज्यूमर डिमांड ही नहीं है, प्राइवेट डिमांड इज नॉट देयर. नाउ गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू सेल इट स्टेक एंड बाय लाइक वॉशिंग मशीन्स. ओके, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. द रिवाइवल ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स विल हैपन व्हेन प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग increases. Okay, so this is likely to increase now. Why? Because the sentiments on private spending has been the lowest now, right? It is probably at its worst phase now, right? Private spending also happens in a cycle कि यार बढ़ेगी फिर घट जाएगी, right? Then crash आ जाता है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, then people start getting job, right? So whatever goes up comes down, and whatever goes down also in a way comes up, back up, right? So from that perspective, it's a good cycle, right? And private sector demand is likely to revive. What governments are betting on is the fact that, see, if the government spending is brought down by 10%, then private spending is likely to increase by 10%. अगर ऐसा नहीं होता, then what is it that the government is going to do? गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तेज़ी से कट कर देगी, ओके, सो दैट दिस बैलेंस गेम इज समवॉट मेंटेन. एंड ऐसा अगले 6 से 12 महीने में होता हुआ लग रहा है दैट इट माइट टेक रफली लाइक 6 to 12 months फॉर प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग टू इंक्रीज. बट वंस दैट स्टार्ट्स टू हैपन, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज आर लाइकली टू गिव वेरी गुड रन अप, राइट? अब ऐसा एग्जैक्टली कब होगा, आई विल लेट यू गाइज नो, राइट? आई राइट दिस टाइप ऑफ डिटेल्ड पोस्ट ऑन माई यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी. इन केस यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर, आप 2 महीने ट्राई करके देख लो, आपकी खुद की नॉलेज, योर नॉलेज विल go up dramatically. I am already telling you, people have been extremely happy with the entire experience of community membership. So try it out for a couple of months and you yourself will see a difference. The fourth key point is regarding the government spending. As I was speaking on the earlier point, I will now explain it slightly differently by using some data, right? So for example, take a look at this particular chart, and what you will notice is that this 2023 is the actual spending by the government, right? And उनका gross tax collection वगैरह बताया है, total direct tax collection बताया है. Fiscal deficit का meaning भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान के चलो that government is earning 100 rupees, okay, and it is doing a खर्चा or expenditure of 106 rupees. Then what is the fiscal deficit? Fiscal deficit is roughly 6%. Okay, so that is the meaning of fiscal deficit, that government की earning इतनी नहीं है, but it is spending money by borrowing money, right? So that reflects in the form of deficit. Now what government is telling you now is that, see, these are our revised estimates, these are our budget estimates, and as per these different estimates, this is the likely scenario in 2024 and 2025 that we are going to move from 6.4% deficit to 5.1% deficit. So this is the big cut. So they are going to slow down in terms of spending money on infrastructure projects. I'm not saying कि infrastructure बनेगा नहीं. All I'm saying is that there will be slow down in expenditure. अब आप बुद्धि लगा के देख लो कि कौन कौन सी कंपनियों की वाट लग जाएगी इसकी वजह से. फॉर एग्जाम्पल, यार पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, सो इफ दे आर रनिंग विदाउट फंडामेंटल्स, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, IRFC, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, राइट, इट्स अ ऑलमोस्ट 200,000 crore कंपनी, राइट? दिस इज नॉट अ स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप ऑफ अ कंपनी, एंड पीपल आर बेटिंग इट कि ये भाई ये डबल हो जाएगी, राइट? So okay, let's go 2021. This is where the story starts. 24-25 rupees पे था, right? Okay, so it became how much? Like 7-8 times हो गया, right? So this is like absolute crazy growth. The chances of it falling is much higher compared to chances of it growing. Okay, so because the government cannot keep on spending money at the same rate as it has been doing. More importantly, we don't know in which area the government will spend on infrastructure. For example, yeah, subcontracting projects आ गए उनके,
रोड्स ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर दिया इंस्टेड ऑफ रेल. So it's very hard to guess. There is much higher likelihood of failure by investing in these type of stocks. हाँ बोलोगे अक्षत आपने रैली मिस कर दी, राइट, 100% गेन मिस कर दिया दिस दैट. नहीं भाई साहब, बहुत सारे अच्छे स्टॉकों में बन गए हैं ऐसे. इट्स नॉट एज इफ दैट आई हैव मिस. यू कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम एवरी सिंगल स्टॉक दैट इज आउट देयर. एंड रैली मिस कर दी, रैली मिस कर दी. 6,000 listed stocks हैं. There are 6,000 listed stocks in India. Can you make money from every single bet that you are taking? No. All you have to simply do is कि भाई आपका कोई portfolio है. You invest like let's say 5, 6, 7 lakh rupees a year. And आपका गोल क्या है, राइट? योर गोल इज कि यार आई मेक लाइक 25-30% रिटर्न्स ऑन माई कैपिटल, राइट, एंड बीट द मार्केट. दैट इज वॉट योर गोल इज. सो एज लॉन्ग एज दैट इज हैपनिंग सेंसिबली विदाउट यू टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, स्टेइंग इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स. उनको सिस्टमेटिकली समझाई जाती हैं सब चीज़ें. बाकी तो हल्ला मचाने वाले लोग बहुत होते हैं. अभी आ जाएंगे कॉमेंट सेक्शन में कि आपने ये रैली मिस कर दी, वो रैली मिस कर दी. भाई मेटा में 150% गेन, अमेजॉन पिछले 6 महीने में हैज़ ग्रोन अ लॉट, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपका IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, बहुत सारी चीज़ों में हो गया, राइट. सो आई मीन देयर आर लाइक 100 डिफरेंट थिंग्स. सो राइट नाउ आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन माइक्रो कैप्स. आई फील दैट देयर इज अ गुड रैली दैट इज अबाउट टू कम इन माइक्रो कैप सेगमेंट. वाई? उसका मैं आपको फिफ्थ एंड फाइनल रीजन बता देता हूँ. देखो होता क्या है कि व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, a lot of companies default on their debt. Now what type of companies will default on their debt? Well, these would be companies जिनके पास cash flows नहीं है, small companies होंगी. They will struggle to expand their operations. They might not be profitable. So in a high interest rate phase of the economy, these companies get crushed. Okay, so पिछले 2-2.5 सालों से 2.5 years, the interest rates have been very high. जो भी माइक्रो कैप कंपनीज, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज क्रश होनी थी, majority of them have already gotten crushed. Now when the interest rate goes low, these type of companies in a growing economy, one could say that they have been able to survive. So at least 3-4 सालों तक भाई इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड इफ देयर इज नो प्रॉब्लम इन दी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सेगमेंट, देन दीज आर द टाइप ऑफ कंपनीज दैट कैन ईजिली डबल. अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ SW सोलर का, राइट. नाउ दिस इज अ कंपनी इन विच रिलायंस हैज पिक्ड अप स्टेक इन द ईयर 2022. ओके, एंड SW सोलर को आप कंपेयर करना सुजलॉन एनर्जी से, राइट. सो आई विल जस्ट डू दैट कंपैरिजन वेरी क्विकली. सो व्हाट यू विल नोटिस इज कि यार देखो, सबसे पहली चीज़, दिस इज अ 13,000 करोड़ कंपनी. दिस इज नॉट वेरी बिग लाइक IRFC, RVNL एंड ऑल दैट स्टफ. सोलर इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, सो टू से, कि इसमें बहुत सपोर्ट आता है. एंड व्हेन डज द सपोर्ट हैपन? वेल, द सपोर्ट हैपन्स व्हेन द इकोनॉमीज आर ग्रोइंग. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द प्राइम रीजन्स वाई सुजलॉन एनर्जी गॉट क्रश्ड, तो आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल सुजलॉन एनर्जी यूज टू बी लाइक अ मल्टीवैगर स्टॉक, सो टू से, अप अंटिल 2008 से उसकी पिटाई शुरू हुई एंड देन इट फेल ऑल द वे टू 17-18 रुपीज़. भाई 2008 से क्यों पिटाई शुरू हुई? बिकॉज दैट वॉज द श्रिंकेज फेज ऑफ द इकोनॉमी. जो अमीर लोग पैसा देते हैं, डोनेशन, ग्रांट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन लाइक रिन्यूएबल्स, दिस दैट, व्हेन डज इट पिक अप? वेल, इट पिक्स अप इन अ गुड इकोनॉमी व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर लो, फंडिंग होती है लोगों के पास, वगैरह वगैरह. सो 2008 फेज हो गया, 2020 फेज हो गया. दीज वर बैड फेजेस, सो टू से, टेम्परेरीली, राइट. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल SW सोलर की जो पिटाई हुई वो कहाँ हुई, राइट. इट वॉज ट्रेडिंग एट 600 रुपीज़, इट फेल ऑल द वे टिल 97. कब भाई? 2020 में, राइट. सो वहाँ पे पिटाई हुई एंड आफ्टर दैट इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग. Compared to other solar companies, so to say, it has not given the type of run up that other solar companies have given. This is a small cap stock. Of course, there is risk. I'm not pushing you to buy this stock. I'm simply helping you understand the rationale. And it has been backed by a big player. For example, Reliance is a very big player. Regulation it can handle. टर्न अराउंड होता है किसी भी स्टॉक में. सो अकॉर्डिंग टू मी SW सोलर इज इन दैट टर्न अराउंड फेज. ऐसे ही कुछ मैंने आपको JP पार्क में भी बताया था, लोगों के अच्छे पैसे बने, 150-200%, ऑल दैट स्टफ. सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दीज आर सेंट्रल मैक्रो पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ कम्स अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स कि यार आप तो है ना, अभी you are talking about all this stuff and there is a chance that these stocks will not grow. Of course, there is a very high chance that these stocks will not grow. बहुत सारी problems हो सकती हैं. Maybe economy will shrink, who knows, maybe there will be a new war, maybe China will suffer a lot more than we are expecting. So in that situation, there is likely to be high volatility in the market for the next 2 years. Because अभी होने क्या वाला है, किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंटरेस्ट रेट कट था, राइट. इट यूज टू बी लेट्स से समवेयर इन 2008 रफली 5.25, राइट. फिर जीरो हो गया, राइट. लेकिन ये जीरो होने में टाइम तो लगा ना यार, फ्रॉम 2006 2 साल लग गए.
फिर सिमिलरली यहाँ पे बढ़ने में, राइट, फॉर एग्जाम्पल इन 2022 एंड अभी वी आर इन 2024, अगेन 2 साल तक इंटरेस्ट रेट फॉर 2 years इंटरेस्ट रेट kept on going up. So the next 2 years are going to be about interest rate cuts. So it might take from 2024 to 2026 for the interest rate to go from 6% all the way till new normal, whatever that is, roughly let's say 3% तक गिर सकता है. So यहाँ पे 2 साल लगेंगे, right? So in this 2-year period there will be high volatility in the market. Now volatility का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ. For example, we are at 21,600 right now. Okay, so volatility का मतलब होता है कि it will probably trade in this range. Okay, so for example, maybe the market will be like let's say 30,000 and all the way to 20,000. So इस range में market घूमता रहेगा, right, for the next 2 years. So this is the range in which it will move. When the interest rate gets cut, then there will be another big rally that is likely to come. So this is what my approximation is कि इस तरीके का कुछ होने वाला है for the next 2 years because the economy looks more stable than it was looking in the last 3 to 4 months. Now, why did that happen? Because one of the primary concerns, or there were 2 primary concerns. One was regarding the US growth rate. So the data is coming in regarding the US growth rate. It looks okay. There is no problem in terms of US growth rate. उनका job situation भी ठीक है, no issues there. Second was the problem with the Chinese economy that their real estate market had completely crashed and there was massive pain in the Chinese economy, Chinese sector, and इसलिए Alibaba वगैरह stocks काफी पिटे because of that reason and it's still going down because of that reason. So the extent of damage people were expecting on the Chinese economy, now economists are coming out saying कि यार इतना damage नहीं है, it's okay. है damage. I mean, it's bad that Chinese economy is not growing. But to cut the long story short, the situation they were expecting कि maybe like 100 units of damage होगा, but the damage has been 80 units, right? So from that perspective, the situation in China also does not look that bad. So therefore, it is being touted that for the next couple of years, there is unlikely to be any major dangers to the वर्ल्ड इकोनॉमी. एक मेजर डेंजर ऑलरेडी हो चुकी है, वर्ल्ड इज रीबिल्डिंग फ्रॉम दैट एंड वंस थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राइट, आई मीन वन कुड आर्ग्यू दैट इट इज़ rise of right wing all across the world. For example, Putin हो गए, जर्मनी में हो गया, इटली में हो गया and all that stuff. इंडिया के बारे में मैं नहीं बोलूँगा. So from that perspective, there is more political stability in the world, so to say. And when the interest rates are made low, for example 3% या 0%, hopefully, then the world is going to trade more and that will be good for the world, so to say. So that is my hypothesis. There are problems around debt which can translate into bigger problems in the world, but अगले 2 साल by keeping the market sideways volatile, this debt can also be brought down, not in absolute term, but the growth rate of debt will be brought down. Okay, so that is likely to happen. Hopefully आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. Now a natural response will come कि यार मार्केट गिर गया तो क्या करेंगे, राइट? सी हेजिंग करके आपको चलना होता है. आई एम ऑल्सो हेजिंग माई पोर्टफोलियो. फॉर दैट आई एम इन्वेस्टिंग इन समथिंग कॉल्ड एज MLD, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स. मैं आपको फटाफट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. नाउ व्हाट आर एग्जैक्टली मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स? सो फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि व्हेन बिग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर बाइंग लेट्स से 10 crores ऑफ HDFC बैंक स्टॉक, ओके, सो ऐसा थोड़ी कि यार दिस इज कॉल्ड एज नेकेड पोजिशन, ओके, कि आपने सिर्फ खरीद के डाल दिए, राइट, एंड फिर HDFC बैंक में कुछ स्कैम हो गया, कुछ हो गया, देन दिस 10 crore कैपिटल बिकम्स लाइक 2 crores, राइट, वेरी क्विकली. ऐसा होगा नहीं, लेकिन बहुत कम चांसेस होने के, बट इन केस दिस happens, right? So big investors who are putting big money in the market, what they do is that they do something called as hedging. Okay, so they will, for example, buy insurance via derivative products, or they can buy call put options in order to hedge their portfolio. कि market गिर गया तो यार हमारे पास ये option है, we can execute it, and in that way our loss is reduced. Now for retail investors like you and me, it's a problem because हमें expiry नहीं समझ में आती, which expiry to buy, हाउ टू स्क्वेयर ऑफ पोजीशंस, टैक्सेशन ट्रीटमेंट हमें समझ में नहीं आता, दुनिया भर की प्रॉब्लम में होती है, एंड कौन बैठ के दिन भर मॉनिटरिंग करता रहेगा. सो फॉर दैट यू कैन बाय MLDs. ओके, सो दीज आर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स. दीज आर प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड टाइप MLDs. इसमें होता क्या है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए, इफ यू पुट 100 rupees, देन द वैल्यू ऑफ दैट 100 rupees विल रिमेन 100 rupees. वर्स्ट केस सिनारियो. ओके, सो दिस इज वर्स्ट केस सिनारियो. बेस्ट केस सिनारियो, you are going to make 33% or 33 rupees on it. Okay, and let me just give you different scenarios of the market that how does this particular MLD works, and I have linked one of my articles on MLD. You can go and read it, understand it more, and then if it makes sense for you, you can take some positions via MLD. See, अगर negative scenario होता है market में, right, कि for example market गिर गया from roughly 21,500 पे है and it falls to 17,600. So this is roughly a 20% nifty loss. In your case, if you have put money in MLD, your loss will be 0% over the next 2 years. Okay, अगर bullish scenario
ज़्यादा हो गया, right, then you will make even more money. The point is that your capital is not lost. That is the good part of investing in this MLD. In case you want to understand more, I have linked my article. You can go and read it. अब बात करते हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स की, राइट, एंड विच इज़ मेनी पीपल माइट बी वेटिंग, बट आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी क्विक पिक्चर हियर, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट दैट यू कैन टेक अ लुक, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल हियर व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दिस गिव्स यू अ फॉरवर्ड 12-month प्राइस टू अर्निंग रेशियोज ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज. इसके हिसाब से एवरी सिंगल इंडस्ट्री इज ओवर वैल्यूड. अब जैसे कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और कंज्यूमर स्टेपल्स भी ओवर वैल्यूड है. वाई? बिकॉज कंज्यूमर डिमांड इज लेस, सो देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड कि अर्निंग्स लेस होंगी इसमें. जो अभी आपको 3-4 क्वार्टर्स की अर्निंग दिखेंगी वो खराब दिखेंगी. दैट इज वॉट एनालिस्ट्स आर एक्सपेक्टिंग. सो एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट बैंक्स एंड मे बी फाइनेंस स्टॉक्स, every other sector is overvalued. लोग मेरे से पूछते रहते हैं why 80-85% of my money is now in finance. Here is the reason why. Okay, that right now banks are somewhat undervalued. Except for banks in the Indian economy, most of the things are unfortunately overvalued. अब ऐसा हो क्यों गया है? Again, I had given you the reason when I was discussing macros that due to government spends on infrastructure, right? So infrastructure से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, right? And private consumption जब तक नहीं होगा तब तक इनकी earnings improve नहीं होंगी. Consumer staples, consumer discretionary, IT तो yeah, it's just in bad shape. We don't know what is going to happen next. I'll make like a separate video on my Hindi channel. I will link it somewhere in the description comment box. You can go and check it out, right? I will give you industry specific viewpoint of different stocks. So to cut the long story short, here are 3-4 key points I will tell you about stocks. See, IT में अभी बहुत डामाडोल काम चल रहा है. We don't know what is going to happen. There is no clear indication where growth is going to come from. I hold IT. I have started to sell it. Okay, so very simply put, मेरा 36% gain बन गया है in the IT index in less than a year. Very happy with that. But now I am started to exit positions because I don't know where the next round of growth is going to come. Mid-cap ITs I am not buying at all, right? I see very big risk in that. RVNL, IRFC तरीके के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स नहीं खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू सेल सम होल्डिंग्स इन इट, एंड वो ब्लॉक डील बल्क डील में निकलते हैं यार, फिर स्टॉक गिर जाता है, राइट, एंड यू माइट नॉट बी एबल टू एग्जिट इट सेंसिबली. If you are looking for multi-baggers, then picking something like micro caps might make the most sense right now. I will give you a detailed viewpoint on micro cap investing over the next 15 days on my YouTube member community channel, right? I will write detailed posts जिससे आपको समझ में आ जाए. I have started to build positions on micro caps. On top of that, if you're looking for safe investment options, it's private sector banks right now. कोई भी आप बैंक उठा लो, मैं आपको analysis दे दूंगा on different sectors, so that will give you more confidence. Commodities से दूर रहें. Now it is a very dangerous time for commodities कि आपने metals खरीद लिए, oil gas खरीद लिया and all that stuff. Dangerous stuff right now because we don't know to what extent governments are going to spend money, right? Because एक बार interest rate cut होगा and then it's mostly about private consumption, right? It's not that much about government spending. So be a little bit sensible. Finally, prepare for volatility. 2 years is going to be a volatile phase because interest rate धीरे धीरे करके नीचे आएंगे. It will not come in one झटका only, right? So that's the viewpoint. I hope that it gave you sense, it gave you clarity on how you can redesign your portfolio in case you are considering that. Thank you so much for watching, and I'll see you very soon. Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks including delay and/or default in payment. Read offer documents carefully before investing.